Hello my dear students, we will continue our previous topic, derivative as a rate measure. Now see the question I have written here. The volume of the sphere increases at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter. Now see, suppose r be the radius of the sphere, small r be the radius, capital V be the volume of the sphere, and for the surface area we are using notation S. Capital S be the surface area of the sphere. Radius of the sphere is given 5 centimeter. Also we have given here the volume of the sphere increases. It means the rate of change of volume at any time t is 20 centimeter cube per second. It means we have given dV by dt. Rate of change in volume at any time t is dV by dt. We have to find the rate of change in surface area. What is the notation for surface area? Capital S. Rate of change in surface area at any time t is ds by dt. So write down given first. Let r be the radius. r क्या है? रेडियस. s क्या है? S be the surface area. And S was surface area, R was radius, V be the volume of the sphere. V be the volume of the sphere. Isn't it? Okay. Now, write down given. What we have given? Rate of change in volume. Rate of change in volume is dV by dt. Rate of change in volume is dV by dt. क्या है dV by dt? 20 centimeter cube per second. And also we have given radius. Radius कितना है? 5 centimeter. Rate of change. Now we have to find rate of change in surface area. It means we have to find ds by dt. Okay, dV by dt is given. So first use the formula for the volume of the sphere. क्या formula है volume of the sphere का? Volume of the sphere is V equal to 4 by 3 pi r cube. The volume of the sphere is V equal to 4 upon 3 pi r cube. Now differentiate this with respect to t. Differentiate with respect to t. क्या आएगा v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t? dv by dt. 4 by 3 कांस्टेंट मल्टीपल में आउटसाइड, पाई आल्सो आउटसाइड. r क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3r स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t इज dr by dt. ओके, dv by dt इज गिवन. तो dr by dt का वैल्यू फाइंड कीजिए. तो क्या आएगा? dr by dt dt इक्वल टू दिस 3 गेट कैंसिल. तो क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dv by dt. इसको लेफ्ट साइड में लेके आए मल्टीपल में, तो डिवीजन में जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो dr by dt इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर dv by dt. ओके, dv by dt इज गिवन.
क्या है 1/4πr² dV by dt is 20, तो ये आएगा 4 × 5 20, सो 5/πr², किसका वैल्यू है dr by dt। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला यूज कीजिए द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। क्या फॉर्मूला है द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर? S इज इक्वल टू 4πr²। द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज S इज इक्वल टू 4πr²। इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। S का डेरिवेटिव आएगा ds बाई dt, 4π आउटसाइड, r² का डेरिवेटिव आएगा 2r, और r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dr बाई dt, 2r इंटू dr बाई dt। अभी वैल्यू पुट कीजिए, 4 × 2 8πr इंटू dr बाई dt। dr बाई dt का वैल्यू क्या है 5/πr²। पाई गेट कैंसिल, एक r कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 8 × 5 40/r, 40/r। रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा ये 8। सो ds बाई dt आएगा 8, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. Okay. Isn't it? The surface area is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, वहाँ से आपको dr by dt मिलेगा, फिर वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, simplify and substitute the values, isn't it? Okay, now we'll take one more. Okay, next question, question number 12. The age of the cube, the age of the cube, the age of the cube is decreasing at the rate of, is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which, find the rate at which, find the rate at which its volume is decreasing, its volume is decreasing when the age of the cube is, when the age of the cube is age of the cube is 2 centimeter. Okay, here age of the cube
that is 2 centimeter is given. The age of the cube is decreasing. It means change in age of the cube, whether it is increasing or decreasing. So suppose x be the age of the cube. Okay, x be the age of the cube, then x is equal to 2 centimeter. Rate of change in age of the cube at any time, whether it is increasing or decreasing. Here is we have given decreasing, so dx by dt is equal to 0.6 centimeter per second. And what we have to find? We have to find the volume. We have to find the rate of change in volume. Volume is decreasing. Means we have to find the rate of change in volume when it is decreasing. Okay. Let x be the age. X be an age. And V be the volume of the cube. Okay, given what we have given, x is equal to 2 centimeter. Rate of change in age, whether it is decreasing at any time t, that is dx by dt equal to 0.6 centimeter per second. We have to find rate of change in volume, which is decreasing. So what is the formula for the volume of the cube? The volume of cube is क्या formula है? V equal to side cube h cube, that is V equal to x cube. Differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. क्या आएगा V का डेरिवेटिव with respect to t? dv by dt. x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx by dt. 3 into x, what is x? 2 centimeter, 2 square into dx by dt 0.6. So 3 into 4 into 0.6. 3 4s are 12, 12 6 are 72. It is 7 point. dv by dt. यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब is decreasing at the rate of 7.2 centimeter cube per second. Isn't it? Check करो. x का वैल्यू 2, 3 4s are 12, 12 into 0.6, 12 6 are 72. It is 7.2. Isn't it? सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज v इक्वल टू एक्स क्यूब साइड क्यूब. यू आर फैमिलियर विद द क्यूब. ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट करने के बाद x और dx बाई dt का वैल्यू पुट कीजिए. एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस? इजंट इट? ओके, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू.